Hello students, hope all are doing well. Okay, in previous class we started financial management. So under the financial management we discussed about what is the need of financial management and how the financial management is done and what is the importance and role of the financial manager. Okay, so now we will discuss the main things, that is the functions or decisions of the financial manager. So here a financial manager has to take a decision regarding the finance, how to manage the finance, and the very important decisions regarding the finance, that is financial decisions. This financial decision is categorized under three terms, that is, okay, the financial manager has to take three decisions, that is finance decision, investment decisions and dividend decisions. Okay, so under the finance decision, the financial manager has to take decision regarding the raising fund. Okay, so raising fund, so this is divided into two, that is equity and debt. Again, under the investment decision, the finance manager has to take decision regarding capital budgeting, decision and working capital decision. And under the dividend decision, the financial manager has to take decision regarding retained earnings, and distribution of dividend. Okay, under the financial decision, the finance manager has to take decision regarding the finance, investment and dividend. That means from where he is going to acquire the finance or procure the finance. Okay, under the how he is going to procure the finance, by way of equity or by way of debt. Okay, then he has to decide the procured amount has to be invested. So investment decision he has to take, whether the investment whether the amount is invested into capital budget or under the working capital. Then after that, when we invest the amount into the business, then automatically we will earn, that is in return we will earn. So what the earnings should be divided. So how the earnings should be divided? By way of retained earning or by providing dividend to the shareholders. So this decision is very important decision in the organization, that the financial manager has to take this decision by keeping lot of factors. Okay, so factors is very important one. So by keeping in mind various factors, the financial manager has to take decision regarding these things. Okay, so we will see the finance decision. Under the finance decision, the financial manager has to take decision regarding the equity and debt. What is equity and debt? That means how much amount the financial manager has to raise fund from the equity or raise fund from the debt. Okay, so here it is very important decision whether we are going to raise the fund from the equity or we are going to raise the fund from the debt. It is very important one, because both are having the risk and the cost analysis. Okay, we have to see the cost factor also and risk factor also. Okay, so we have to see here which one is having risk, low risk, or which one is having highest risk. So here we can say that this debt is having risk. Okay, debt is having highest risk and equity, that is it is having lowest risk. So what is equity? Here equity is known as a owner's fund and debt is known as a borrowed fund. Equity is known as a owner's fund and debt is known as a borrowed fund. Okay, so borrowed fund, under the borrowed fund क्या क्या हो सकता है? Debentures or comes under the borrowed fund, loans and advances or comes under the borrowed fund. What are all the things comes under the owner's fund? That is share owners means here shareholders. Okay, so owner's fund, equity share, preference shares and retained earnings. Okay,
owners fund, under the owners fund, equity shares, preference shares, retained earnings. In simple we can say that shares and retained earnings. Okay, now here the thing is what the finance manager has to take decision how much he is going to raise the fund from the equity, and how much, that is the proportion, how much he is going to raise the fund from the debt. That is very important one for a financial manager. Okay, finance manager. So now we'll see the factors, that is factors affecting the finance decision. That is very important one, because every manager has to keep in mind some factors which is going to affect the decision. Okay, so कोई भी decision जो है ऐसे ही हम नहीं ले सकते हैं, एनालाइज करना होगा हमें कि कौन सा फंड हम रेज कर सकते हैं. एक्चुअली इन द ऑर्गेनाइजेशन मिक्स ऑफ द बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. इक्विटी एंड द डेप्ट दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिक्स करके ही हम लोगों को करना चाहिए, बट इन द मिक्स आल्सो वी हैव टू सी हाउ मच प्रोपोर्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो ये कितना प्रोपोर्शन में हम रखेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट ही हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें करना होगा. ओके, सो नाउ विल सी द फाइनेंस डिसीजन, डिटेल अबाउट द फाइनेंस डिसीजन. Factors affecting the finance decision. So here every manager, that is every finance manager has to keep in some things which are going to affect the decisions. Okay, so आप भी अपना सोच सकते हैं, अपना घर में कुछ भी amount है आपके हाथ में, while you are going to spend the amount, you have to keep in mind the things, other things कि हम ये पैसा इसमें इन्वेस्ट इसमें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, क्या हमें करना चाहिए, कैसा हमें ये पैसा को यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, ये सब बहुत कुछ डिसीजन आपको लेना होगा. ओके, सेम थिंग फाइनेंशियल मैनेजर को भी ऐसा ही डिसीजन लेना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू सी द कॉस्ट वन. ओके, सो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन इज कॉस्ट. सो हियर कॉस्ट मीन्स फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन regarding the cost. That means how much cost we have to spend to procure the fund. Okay, so procurement of fund like equity हमें चाहिए, equity to raise the funds from the equity or to raise the fund from the debt, ये दोनों हमें देखना चाहिए. बट वहाँ पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि what is the cost. अगर डेप्ट में कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है while procuring fund from the debt, अगर हम डिबेंचर इश्यू करना चाहते हैं, द डिबेंचर कम्स अंडर द डेप्ट, डिबेंचर इश्यू करना चाहते हैं, बट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज मोर देन 10,000 और समथिंग, जो एक्सपेंसेस आप अमाउंट को प्रोक्यूर करने के लिए, डिबेंचर इश्यू करने के लिए आपको स्पेंड करना होगा. देन यू हैव टू कंपेयर दैट विद द इक्विटी. ओके, सो जब इक्विटी में आप एक्सपेंसेस, इक्विटी दैट मीन्स शेयर्स आप इश्यू करेंगे, सो व्हेन यू आर गोइंग टू इश्यू द शेयर्स ऑटोमेटिकली यू हैव टू स्पेंड समथिंग, दैट इज एक्सपेंसेस आपको स्पेंड करना होगा while issuing the shares. So you have to compare the things. कॉस्ट जो है आपको डेप्ट में ज़्यादा आ रहा है या इक्विटी शेयर्स में आपको ज़्यादा आ रहा है. फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स में आपको कॉस्ट, लाइक इफ यू आर गोइंग टू इश्यू इक्विटी शेयर्स, योर कॉस्ट इज 10,000 rupees, and by debt, that is if you are going to issue debentures, then automatically your cost is 11,000 rupees, or say for example it is 15,000 rupees. Okay, rupees 15,000. So here a financial manager has to take wise decision, which is which decision is he has to take. Okay, whether he go for equity or he go for debt. So definitely the less cost, जहाँ पे cost less होगा वही क्या करेंगे, वो opt करेंगे. So here the cost is less in the equity shares, so definitely financial manager क्या करेंगे, equity shares में ही ध्यान देंगे, that is equity shares को issue करके fund raise कर सकते हैं. So cost means where the cost is less, the financial manager has to opt that thing for the finance decision to raise the fund. Okay, समझ में आया. So cost, जो cost हम spend करेंगे issuing equity shares और issue of debentures, और कोई भी लोन लेने के लिए हमें जो कॉस्ट या एक्सपेंसेस हमें स्पेंड करना होगा, वो एक्सपेंसेस किस में कम होगा वही जो है आपको ऑप्ट करना होगा. ओके, सो कॉस्ट में हम देखे थे लेस कॉस्ट को ही हम क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे. सो लेस कॉस्ट जहाँ पे होगा वहीं से हम क्या करेंगे, फाइनेंस रेज करेंगे. ओके, नंबर 2 रिस्क. अगेन हमें देखना होगा
we are going to invest a lot of amount in the business, that is financial decision. Actually the financial decision is belongs to the long term one. So long term जब हम invest करने वाले हैं, so long term के लिए हम finance raise करने वाले हैं, and the finance is going to invest in the business for the long term basis. Okay, so long term use के लिए जब हम finance को raise कर रहे हैं, then automatically here we have to see the risk factor. So risk factor को हमें ध्यान देना होगा. Risk factor in the sense जहाँ पे आप debentures में आपको repayment करना होगा, but in case of equity so there is no need of repayment. Okay, repayment आप जल्दी ही नहीं करेंगे, but in case of debentures definitely आपको कुछ period के बाद repayment करना होगा. So if you are not repaying the amount, then automatically there will be a problem. Okay, so ये आपको देखना होगा. So अगर आप वो repayment नहीं करेंगे, then जो भी आपको payment किए हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, then automatically आपके बिजनेस में बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है. सो वहाँ पे क्या है, डेप्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप्ट द डेप्ट देन ऑटोमेटिकली देयर इज अ रिस्क. सो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा. बट इन केस ऑफ इक्विटी में क्या है कि नो नीड टू रीपेमेंट द अमाउंट. ये अमाउंट हम कब रीपेमेंट करेंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस. ओके, सो जब बिजनेस को या कंपनी को हम वाइंड अप करने वाले हैं, एट द टाइम ओनली वी आर गोइंग टू रीपे द अमाउंट. सो यहाँ पे रिस्क आपको ज़्यादा नहीं होगा. सो आपको ये देखना होगा रिस्क फैक्टर में लीस्ट रिस्क कौन सा फिनेंस में होगा, दैट इज फंड रेज कर रहे हैं, लीस्ट रिस्क जिसमें होगा वही आप ऑप्ट करेंगे. सो लीस्ट रिस्क को यहाँ पे आप लेंगे. ओके, समझ में आया. सो रिस्क मीन्स लीस्ट रिस्क, जिसमें रिस्क बहुत कम होगा वहीं से जो आप क्या करेंगे, फाइनेंस को फंड रेज करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वी गो टू द फ्लोटेशन कॉस्ट. Again the financial manager has to see the flotation cost. Okay, so flotation cost here, while issuing the securities we need to spend some expenses. Okay, so this is the flotation cost. So here we have to see flotation cost जिसमें ज़्यादा होगा वो हम यहाँ पे हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि that is also comes under the cost. So automatically flotation cost भी आप ज़्यादा करेंगे, then automatically वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है. So here we have to see that whether डेप्ट एंड इक्विटी दोनों में आपको कंपेयर करना होगा. सो इक्विटीज़ में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो यू गो फॉर डेप्ट. डेप्ट में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डेप्ट इन द सेंस वन इज लोन्स एंड एडवांसेस, अनदर वन इज डिबेंचर्स. सो वाइल इशूइंग डिबेंचर्स आपको फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो आप इक्विटी में जाएंगे, या इक्विटी में अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है देन आप कहाँ जाएंगे, शेयर्स में जाएंगे. सो फ्लोटेशन कॉस्ट हियर व्हेन यू आर गोइंग टू इश्यू द debentures or when you are going to issue the shares, at the time you have to spend some expenses, like you have to pay commission to the shareholders, commission to the brokers, underwriters and other fees you have to pay. So यहाँ आपको देखना होगा which security is having least flotation cost. The security which is having least flotation cost, you have to opt the securities. Okay, so फ्लोटेशन कॉस्ट आपको देखना होगा लेस फ्लोटेशन कॉस्ट. Okay, you go for raising fund from where it has having less flotation cost. Okay, next fixed operating cost. So next is fixed operating cost. Again here financial manager has to see what is the fixed operating cost, what is the ratio of fixed operating cost. Fixed operating cost here, if I am having land and other machineries and other things, in my business I am having lot of human resources. So what happened, I have to pay rent for the land, and I have to pay premium and other things. Then I have to pay salary to the workers. So it is a fixed operating cost. ये जो है हम change नहीं कर सकते. Every month or every year you have to pay lot of amount. Human resources अगर मैं ज़्यादा रखती हूँ then automatically I have to pay lot of amount as a salary. Okay. Then अगर मेरे पास land नहीं है, rent में हम लेके रखिए, then definitely I have to pay rent also. So ये क्या
है, कॉस्ट आपको ज़्यादा हो रहा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा आ रहा है। देन सेकेंड आपको ये ध्यान देना होगा, ओके, इन केस इफ आई एम हैविंग building, my own building, and machineries are available, that is according to the new technology, new machineries are available with me, so here less number of workers are there, so automatically क्या होगा, so building is my building, so there is no need of pay rent. Then machineries are new machineries, that is according to the new technology, machineries are new machineries, so human resources are very less, so human resources are very less, then automatically मुझे वहाँ पे पेमेंट भी बहुत कम देना पड़ेगा। देन अदर थिंग इज व्हाट, डेप्ट भी मैंने ऑलरेडी बहुत कम लेकर रखी है, सो इंटरेस्ट भी मेरा कम ही है, सो ये मेरे को देखना होगा, सो इंटरेस्ट भी कम है, पेमेंट भी कम ही देना पड़ रहा है, देन व्हाट द रेंट भी नहीं देना है, सो ऑटोमेटिकली माई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, माई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। सो यहाँ पे मुझे देखना होगा, इन केस इफ आई एम हैविंग लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, आई एम हैविंग लेस फिक्स्ड operating cost, then I can go for debt। क्या कर सकती है मैं, फंड जो है डेप्ट, थ्रू डेप्ट मैं फंड रेज कर सकती हूँ। इन केस मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसा मैं बोली थी मुझे इंटरेस्ट पे करना है, लॉट ऑफ डेप्ट ऑलरेडी मैं प्रोक्योर करके रखी हूँ, देन रेंट देना पड़ रहा है, वेजेस देना पड़ रहा है, देन ऑटोमेटिकली मेरा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट को मैं एक्सपेंसेस के थ्रू, दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के थ्रू स्पेंड कर रही है। देन हियर मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू ऑप्ट इक्विटी, इक्विटी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डेप्ट है एंड मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्या कर रही हूँ, मैं पेमेंट दे रही हूँ, सो यहाँ पे मुझे, और अगर मैं डेप्ट में जाऊँगी देन ऑटोमेटिकली ये जो है रेस हो जाएगा, क्या है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी मैं पेमेंट करूँगी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होने से देन अगेन इट विल अफेक्ट द बिजनेस, इट विल अफेक्ट द अदर प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। सो मुझे क्या करना होगा, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मेरे पास है, देन ऑटोमेटिकली आई हैव टू ऑप्ट द इक्विटी एज रेजिंग फंड। देन इन केस अगर लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, देन ऑटोमेटिकली आई गो फॉर डेप्ट, दैट इज एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आई गो फॉर डेप्ट। ओके, सो यहाँ पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी ध्यान देना होगा। सो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस होगा तो क्या कर सकते हैं, हम डेप्ट को ध्यान दे सकते हैं, डेप्ट से फंड रेज कर सकते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगा देन हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी, थ्रू द इक्विटी वी कैन रेज द फंड। ओके, देन अगेन नेक्स्ट जो है मैनेजर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू सी द कैश फ्लो पोजीशन, हैज टू सी द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ द business. So cash flow position, if there is a stronger cash flow position, cash flow is very strong, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैश जो है फ्लो हो रहा है। ओके, तो स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो होगा तो हम क्या कर सकते हैं, डेप्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, सो बिकॉज हमें क्या चाहिए, वेन एवर वी आर रेजिंग फंड्स वी हैव टू स्पेंड समथिंग। ओके, सो हमें देखने चाहिए, इन केस ऐसा हमको इक्विटी लेने से हमें डिविडेंड ही देना होगा, when there is a profit we have to pay dividend, we have to distribute dividend. Okay, in case loss है तो हम dividend distribute नहीं करेंगे, but debt में जब हम जाएंगे then whether there is a profit or loss we have to pay interest every year or every month we have to pay interest. तो यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, अगर कैश फ्लो पोजीशन हमारा स्टडी है, स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है, then there is no problem to pay interest. Okay, so यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन रहेगा। स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है तो हम क्या कर सकते हैं, डेप्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। इन केस वीकर लेस कैश फ्लो रहेगा, कैश फ्लो जो है लेस रहेगा, देन ऑटोमेटिकली हमें क्या करना होगा, इक्विटी पे ध्यान देना होगा। फंड कहाँ से रेज करना होगा, इक्विटी में हमें फंड रेज करना होगा। ओके, समझ में आया। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी हैव टू सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कैश फ्लो जो है हमारा स्ट्रांग हो रहा है, कैश जनरेट जो है स्ट्रॉन्गर है, जनरेट हो रहा है, देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, डेप्ट से फंड रेज कर सकते हैं। इन केस कैश फ्लो जो है नहीं हो रहा है, कैश जनरेट नहीं हो रहा है या लेस कैश जनरेट हो रहा है, देन वी कैन गो फॉर इक्विटी। ओके, ओके, नेक्स्ट वी विल सी द
state of capital market. Okay. Again, a financial manager has to see the state of capital market. So, state of capital market here, we have to analyze the situation of capital market. So, capital market का situation क्या है, ये analyze करना होगा financial manager का. In case capital market is in boom period, then automatically क्या है कि हम equity share में जा सकते हैं, क्योंकि capital market में जब boom period रहेगा, shares का value जब increase होगा, then only people interested to invest in the share capital. Okay, so at the time we can raise fund from the equity. क्या बोली? Boom period. Boom period means जहाँ पे market increasing situation में है. Boom period means what? Market increasing situation. This is known as a boom period. So boom period market increasing situation में रहेगा, value of shares increasing में रहेगा, then automatically we will go for equity shares. Equities जो है issue करके हम fund raise कर सकते हैं, क्योंकि people क्या करेंगे? Interest लेंगे equity में invest करने के लिए. But when the market is a depression in the sense market में value जो है, market का value, capital market का value reduce हो जाएगा. So capital market का value reduce होना in the sense the value or the value of the share जो है decreasing. Okay, so when the value of shares is decreasing, then automatically people interest नहीं दिखाएंगे shares में invest करने के लिए. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? Debt को opt कर सकते हैं. Okay, so boom period होगा तो हम क्या कर सकते हैं? Boom period में हम equities से fund raise कर सकते हैं. डिप्रेशन पीरियड होगा तो हम क्या कर सकते हैं? डेप्ट को ऑप्ट कर सकते हैं. दैट इज बाय वे ऑफ डेप्ट वी कैन रेज द फंड. ओके, सो दिस इज द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. ओके, देन हम देखते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन. Okay, next point is control consideration. Under the control consideration, here the financial manager has to decide according to the shareholders. Okay, if the existing shareholders want to retain their control over the business, so if the existing shareholders want to retain their control over the business, then automatically it opt for debt. Okay, debt में जाएंगे. अगर existing shareholders they think that okay, loss होने से भी कोई बात नहीं, उनका अपना कंट्रोल लॉस होने से भी कोई बात नहीं है, देन हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी में जा सकते हैं. द थिंग इज व्हाट, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर कंट्रोल रिटेन करना चाहते हैं बिजनेस में, देन हम क्या करेंगे? डेप्ट से ही फंड को रेस करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू गेट समथिंग इन रिटर्न. ओके, सो उसमें जो भी हम लोगों को अमाउंट मिला है, ये हम लोगों को देखना है. व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI इज more than the cost of debt. More than the cost of debt. Okay, so return on investment is more than the cost of debt, then we can go for borrowed fund. हम कहाँ जा सकते हैं? borrowed fund से fund raise कर सकते हैं, because हम लोग हमें जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. कॉस्ट से ज़्यादा मिल रहा है, हमें ये ध्यान देना चाहिए. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना कॉस्ट हम स्पेंड किए हैं, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए. सो इन केस अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द cost of debt, then we can go for the borrowed fund. If it is less than the cost, then automatically हम लोगों को क्या करना होगा? इक्विटीज में हम लोगों को जाना होगा. ओके, okay, clear? So return on investment, if the return on investment is more than the cost of debt, then we can go for borrowed fund. We can go for borrowed fund. Okay, so next point is next point is tax. Okay, so when the tax rate is higher, when the tax rate is higher, we can go for debt. Okay, so when the tax rate is higher, we can go for debt. When the tax rate is lower,
then we can go for equity. Okay, so why टैक्स, दैट इज जितना भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, द कंपनी हैज टू, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे टैक्स. ओके, सो व्हेन द टैक्स रेट इज हायर, यहाँ पे हमें देखना चाहिए लाइक टैक्स जो है जितना हमारे पास इनकम बचा रहेगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉफिट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉफिट वी हैव टू पे द टैक्स. ओके, when we are opting debt then we can give interest. Okay, so interest क्या होगा, प्रॉफिट से रिड्यूस हो जाएगा. इंटरेस्ट क्या होगा, प्रॉफिट से रिड्यूस हो जाएगा. सो when interest is deducted from the profit, automatically profit क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. so profit रिड्यूस होगा, then आपको क्या है, टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपके हाथ में है उतना ही आप टैक्स पे करेंगे. बट इन केस व्हेन टैक्स रेट इज लोअर, तब भी हम डेप्ट को ऑप्ट करेंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होने से भी वो जितना टैक्स है उतना हमें पे करना ही होगा. सो बेटर जब टैक्स रेट हायर रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, डेप्ट को, बोरोड फंड को ऑप्ट कर सकते हैं. व्हेन द टैक्स रेट इज लोअर, देन हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी को ऑप्ट कर सकते हैं. सो अदर देन दिस हमें ये ध्यान देना चाहिए, द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन बाय द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी है ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हमें दिया रहेगा, दैट इज प्रोपोर्शनेट ऑफ द डेप्ट एंड इक्विटी, इसका जो है दे आर गिवन कंडीशन. सो अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्म्स हम लोगों को, वो नॉर्म्स को भी हमें फॉलो करके ये डिसाइड हम लोगों को करना चाहिए कि कितना हम प्रोपोर्शन जो है इक्विटी एंड डेप्ट में हम रखेंगे. सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स which is affecting, which is going to affect the finance decision. So financial manager has to take decisions by procurement of finance by having these points. Okay, ये points को mind में रखते हुए क्या करना चाहिए, एक finance manager को decide करना चाहिए कि finance हम कहाँ से लेंगे, whether from the owners fund or from the borrowed fund. Okay, okay students, I think आपको आज का जो सेशन है वो इंटरेस्टेड सेशन होता होगा और समझ में भी आ गया आपको. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय.